I think content creation for me is expressing myself, right? One way to look at content creation is obviously the name, fame, following, likes, shares, वो सब metrics हो गया. But if you're creating content just to chase these likes, बहुत short term goal है वो. Like अगर वो likes नहीं आएंगे, you'll get discouraged. Do you want to hear the honest answer या the right answer? Right answer. Not the honest one, is it? Hi Anmol, thank you so much for joining on Giriraj Asar podcast. And how are you? I was doing everything. Hey Giriraj, firstly, thank you for the invite. My pleasure to be here and looking forward to this conversation. Yeah, and thank you so much for accepting my invitation and joining in my podcast. So honestly, I seen your bio and your profile and all thing. I seen you are creating content on different on things on comedian. So honestly, first question in my mind, how you shift from a startup founder into a startup comedian and comedy in sales marketing, this kind of thing. How's going this type of journey? Because most of founder honestly या तो एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी फेल होने के बाद चौथी स्टार्ट करते हैं, बट इन यूर केस यू फेल इनटू 2 to 3 कंपनी, देन यू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडियन फुल टाइम. तो Right. आपको do you want to hear the honest answer या the right answer? Right answer. Not the honest one, is it? Well, the answer is यार कुछ चला नहीं तो क्या करूं मैं? I tried my hand at startups, and it was a great learning experience. But for some reason they didn't click. और ये स्टैंड अप तो मैंने ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में शुरू किया था और that clicked. People started loving, the videos. They said, hey, you should do more of this. तो कभी कभी पता नहीं ना कौन सी चीज कहाँ मतलब फिट हो जाती है, कैसे चलती है. सो इट वाज प्रीटी मच द सेम रूट. स्टैंड अप जस्ट हैपेंड. ऐसा नहीं कि कुछ प्लान था. 10 साल पहले मैं, अगर मुझे पता होता मैं स्टैंड अप करूंगा लाइफ में तो मैं स्कूल जाता ही नहीं. But it just happened all of a sudden, and I think at times you have to go with the flow, see what works, and yeah, just enjoy the ride. So stand up, I would say, was an accident, a great accident at that, and I'm loving the journey. Yeah, exactly. And you are also specifically on doing most of your content on marketing, sales, hiring, career. So why you not like doing on particular things and why you not doing other things? मेरा मेजरली जैसे आपने बोला दी कंटेंट इज अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप. Like 60-70% of my content is there. 30% is still generic, which is about everyday life. But मुझे लगता है कॉमेडी में ये बहुत बड़ी एक नीश है which no one is kind of creating content on, right? लोग हस्बैंड वाइफ पे जोक्स बना रहे हैं, लोग एवरीडे लाइफ पे जोक्स बना रहे हैं. वो तो जोक्स हमने सुने हैं. But I think there's a lot of scope of humor in business as well. Business में लोग काफी serious रहते हैं, right? It's always considered कि हाँ मतलब हमेशा serious रहना है business में when you're talking to your customer, when you're talking to your investor or your employees. So I thought why not break the ice, break the monotony और उसमें कुछ अच्छा flavor लेके आए हम. And that's how I started like focusing on business comedy specifically. And I really feel that this is a segment where there's a lot of scope for humor and a lot of people will connect with it as well. So that's how I became very specific regarding that content. Yes, exactly. Honestly, because काफी आधे से ज्यादा तो comedian like engineers and इस फील्ड में तो like काफी comedians हैं, बस entrepreneurship, marketing और इन चीजों में बहुत कम है like, और लोग रहते भी थोड़ा frustrated टाइप के कि यार इधर तो कुछ वही चीज है, क्योंकि मीम्स वगैरह इन सबका टारगेट फिक्स होता है. पॉलिटिक्स हुआ, इंजीनियर्स हुआ, या फिर कोई भी करंट रूमर चल रहा है उसको लेके कॉमेडी वगैरह वही चीजें चलती रहती हैं. मतलब आई थिंक सम ऑफ द गाय लाइक यू जो इन चीजों को लेके भी कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं, इन चीजों को लेके भी बहुत अच्छा लाइक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो लाइक लेट हम अगर कंटेंट पे आते हैं ऑनेस्टली,
ठीक है, तो कंटेंट्स में अभी के टाइम चल रहा है ना, जैसे मोस्ट ऑफ आप जो निकालते हो कि कंटेंट हर कोई एक तो लाइक कंटेंट क्रिएट, बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर्स इतने हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग भी रहता है लोगों के लिए कंज्यूम करना और ये चीजें. सो अकॉर्डिंग टू यू, how people like like misguiding in the content things, ki some people are creating like a media headline, I'm a content creator in finance. like finance बहुत normal term चल रही है, पहले तो फिक्स होता था, बट अभी शायद हर कोई फाइनेंस का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कंटेंट क्रिएट कर रहा है. राइट, एज यू सेड, अभी तो मतलब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम ये बहुत इमर्जिंग फील्ड हो गई है. इट हैज बोथ प्लस एंड माइनसेस. प्लस इज lot of content creators have come into the whole industry, and it is good because जैसे आपने बोला भी finance पे बहुत, you don't associate finance as an interesting topic, but इतने सारे content creators आ गए हैं, now it's easy to consume financial information. Accordingly, there are, you know, thousands of topics on which people are creating content. So I think in this game the audience is benefiting the most कि उनको देखना है who they want to follow, right? What type of content they want to consume. उनको किस content creator से ज्यादा connect हो रहा है, क्या relate कर पाते हैं. And I think every content creator will find that niche, right? For instance, if you ask me, I don't think my audience wants to see me dance, right? मतलब मेरा जो content है, मैं बैठ के बस अपना जो भी news के ऊपर कर लिया या current trends के ऊपर कर लिया. That's my style. I don't मतलब I kind of play on my words itself. It's not कि मैं कुछ drama करूंगा. So it's a very different kind of content. On the other hand, you will have, you know, people creating content around, I don't know, क्या जो ये भी trends चलते हैं Instagram के. तो इनमें से I won't say that, you know, कोई misguiding हो रहा है या anything. Everyone has a space in the industry, right? जो हमको अच्छा नहीं लगा, किसी और को अच्छा लग रहा है. Right, so there is space for everyone to grow, and in the end अगर ज्यादा content है तो it is a great situation for the audience, because the audience के पास choice है what they want to watch, who they want to follow, who they connect with the most, right? So it's good. Even bad content is actually good content, right? अगर market में बहुत bad content है, so you know what is bad, eventually it will become good content, right? Because people will start improving. So मेरे हिसाब से I don't necessarily judge content. I judge on the basis of how many people are doing it, right? What is the consistency rate? Over a period of time, it will only mature. So that's a great sign. Yeah, exactly. And also one more, like you created most of content on headlines, like if people write on their Instagram, their LinkedIn, I'm a creator, marketer, and that kind of thing. So why this is like things will become in people mind, like कहाँ पे लोग इतना मिस उस चीज को हो रहे हैं कि exactly वो जो चीज लिख रहा है वो चीज वो बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहा है. इट इज कम बिकॉज ऑफ कंटेंट, या इट इज कम बिकॉज ऑफ वो बहुत ज्यादा लाइक चीजों को लेके इतना हो नहीं रहा है, बट वो ऐसे लिख देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, इवन उन्होंने 1 या 2 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया है, तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग. वो तो आज का मतलब ट्रेंड यही है कि everyone is claiming to be an influencer, everyone is an evangelist, everyone is an expert, everyone is a subject matter expert, SME that you say. तो it's a funny question. मतलब that's where I think the audience should also be careful, like while they are following everyone, but you need to know who is who, right? मतलब अगर जैसे हर कोई डिजिटल मार्केटर बोल रहा है और आप, you know, बिना सोचे समझे, if you're trying to engage that person for your business, then obviously, you know, you will be in a situation where you're like, अरे इसने तो बोला डिजिटल मार्केटर है, इसको खुद कुछ नहीं पता. तो because इतने सारे options है, it's easy for customers to also not know what is right, what is wrong. So why they need to think about that, and we cannot typically stop it, right? See, this is a free world. Social media is a flat platform. कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है. Tomorrow I can claim I have, let's say, 1 lakh YouTube followers. I can just run bots overnight और मेरे को next दिन 1 lakh followers मिल सकते हैं, right? तो I think ये सब हमारे लिए individually judge करना होगा कि not take anything at face value, right? जो दिखता है वो बिकता है, which is what अभी सोशल मीडिया का वही रूल है.
जो दिखता है वो बिकता है, बट ऑडियंस के साइड से दे नीड टू थिंक दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, Exactly. राइट? जो जो दिखता है वो इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू ऑल्सो, दिखता तो है बट वो ऐसा नहीं कि वो सच ही है. तो दिस इज समथिंग विच लॉट ऑफ पीपल से ये बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट बिकॉज नो वन इज मॉनिटरिंग, राइट? सोशल मीडिया इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट? कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि जो आपको बोलेगा कि हाँ आप इसमें स्पेशलाइज हो नहीं हो. तो आई थिंक इट्स अप टू ऑल ऑफ अस to be wise when it comes to dealing with social media. But I think I still feel it's also good, once you know who are the bad ones, you will know who are the good ones also, so let it be that way. Yeah, yeah, बिना exactly. चोट खाए मजा नहीं आता ना. So Exactly. And ऐसा ही है. also, what's content creation for you? Like, आपके लिए content creation क्या है? I think content creation for me is expressing myself, right? One way to look at content creation is obviously the name, fame, following, likes, shares, वो सब metrics हो गया. But if you're creating content just to chase these likes, बहुत short term goal है वो. Like अगर वो likes नहीं आएंगे, you'll get discouraged. For me, it is about, okay, there is something that I want to share. There is something that I want to contribute. There is something, let's say, news correlated, I'm making something. Those are my thoughts, which I want to put out. Right. So for me, content creation in its simplest form at a very fundamental level is a voice that gives you a chance to express yourself. Right. And I'm not saying that only for comedy. I'm saying any content. Let's say you're writing a poem, okay, or you're writing an essay, or you're just a podcast, right? Just say you're a content creator, right? Now you're doing this podcast. It is a way for you to express your thoughts, to bring out some information, to educate the audience, or to influence them, or to make them laugh, or to get them to take a specific action. The goals can be very different, but end of the day, there is a voice, and you want to share whatever you're feeling, and that is what is content creation. Yeah, exactly. Like you are honestly like describe very simple word in the content creation. Content is something you express yourself through anything, through writing, creating Right. video, creating any kind of stuff. And what's your biggest learning in the content space, the content creation? That's another very good question. I think the biggest learning is to be consistent. लोग क्या करते हैं, शुरू तो हो जाते हैं विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म कि हाँ भाई अभी हम करेंगे, ये वायरल होगा वीडियोस, इट्स गुड टू हैव दैट होप, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे सी कि इतना नहीं चल रहा है, इट्स नॉट गोइंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, फिर उनका एंथुजियाज्म कम हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज. So my biggest learning is it doesn't matter कौन क्या देख रहा है, are you improving, are you better than what you were last year, right? That's my biggest learning. आप बस वो सोच के content create करो, the rest will take care of itself, and that's the benchmark I've set for myself. I'll be very honest with you, जिस तरह मैं content create कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी LinkedIn following is negligible, right? I don't know, I have some 4,000 followers, which is nothing. Yes. 4,000 आज किसके भी है? I've been creating content for the last 2 years, right? But for Yeah. 2 years 4,000 followers is it's a joke. वही joke है in itself, right? But I'm like ठीक है, मतलब इस platform पे नहीं, चलो LinkedIn पे obviously have a much larger following and I get my most traction on LinkedIn, but I'm ठीक है, but I'm telling myself it's fine, it will someday catch up. But am I making better content now than what I was making last year? 100%. अगर आप मेरे reels जाके देखोगे to what I'm doing right now, I think I've improved significantly. Next year, if we are doing this podcast, I want to be in a stage where I'll say, हाँ 2023 में जो मैं content बनाऊंगा, it will be much better than 2022, which was much better than 2021, right? तो अगर आप वो benchmark लेके जाओगे, I think you end of the day you will find that voice and you will be that person who you always wanted to be. So I think that's my biggest learning. Content creation game make it's a journey. Keep the metrics aside, focus on becoming better, and yeah, you love the journey. या एग्जैक्टली ऑनेस्टली लाइक मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट था ना उसमें भी लाइक उनका सेम लाइक सबसे बेस्ट उनका रिकमेंडेशन था वो यही था कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो व्हाटएवर लाइक किसी भी फॉर्म का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप अगर
ग्रोथ माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, कि अभी ठीक है मैंने इनिशियल स्टार्ट किया है, 2-3 साल तक नहीं आएंगे लोग, ज्यादा नहीं देखेंगे, बट मेरा काम यही है कि अभी मैं बेस्ट पुट कैसे कर सकता हूँ। आज मैंने वीडियो अपडेट किया तो कल वाले वीडियो में मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, छोटी छोटी राइट, चीजों को लेके, चाहे वो एडिटिंग राइट। रिलेटेड हो गया या फिर वॉइस, एनीथिंग लाइक इन चीजों को। एंड ऑल्सो यू टॉकिंग अबाउट viral and virality content. So what do you think about virality? Because everyone content creator want to कि उनका content viral हो। And यार सबको मिलियनेयर बनना है बट होता नहीं है। सबको वायरल जाना है बट to be honest, reels में I think 2-3 reels have gone viral. I've got 500,000 views. I don't know if that is considered viral. आजकल मे बी वायरल का डेफिनेशन 5 मिलियन 10 मिलियन हो गया, बट आई थिंक जितना ज्यादा वायरल वायरल सोचोगे उतना कम एक्चुअल चीजों पे फोकस करोगे। इनिशियली इवन आई थॉट ये तो वायरल जाना चाहिए, लेकिन ये जा नहीं रहा, तो इट उससे आपका जो मतलब गोल शिफ्ट हो जाता है एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। तो मैं तो सोचता हूँ वायरलिटी के बारे में सोचो ही मत, राइट। मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज, वो वीडियोस आप देखोगे हाउ टू गो वायरल, वो ये बताएंगे वो बताएंगे, ये करना है वो करना है, एंड यार नो वन नोज व्हाट इट रियली टेक्स टू गो वायरल। ऐसा पता होता तो someone will go viral every single time, right? वो होता नहीं है। even if you look at people who've gone viral, उनका एक वीडियो वायरल गया है, ऐसा नहीं कि उनके हर वीडियो वायरल जा रहे हैं, राइट? तो आई थिंक ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। व्हाट यू कैन डू, जो आपके हाथ में है, टू क्रिएट बेटर कंटेंट। जो आपने पंच लाइन डाली है, कैन आई इंप्रूव दैट पंच लाइन? ओ, वो उस वीडियो में ऑडियंस डिडंट रिएक्ट क्योंकि मैंने उसको ऐसा बोला था। तो इफ यू कीप प्लेइंग दैट गेम, राइट, कीप इम्प्रूविंग इट, फॉरगेट अबाउट द कि कुछ फॉर्मूला है क्या वायरल जाने का, ये वो just keep focusing on the basics, which is creating better content. Eventually you will go viral. हाँ, और आई थिंक वायरलिटी की वन थिंग और है कि लाइक वायरलिटी एक ठीक है, एक कंटेंट पे आ गई आपकी, बट ठीक है कल कोई और चीज वायरल हो रही है, परसों कोई और चीज वायरल हो रही है, बट आपका जो कंटेंट है वो तो सेम टाइम पे वही चलता रहेगा अगर आप Correct. इम्प्रूविंग करते रहेंगे तो। देयर सेम थिंग आई ऑनेस्टली लर्न फ्रॉम द बारिको की जो पोस्ट आई थी कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अबाउट वायरलिटी रदर देन जो लॉन्ग टाइम इम्प्रूविंग गेम, बिकॉज एक वायरल हो सकता है आपका, देन इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि आपको क्रिएटिंग तो करना ही पड़ेगा, आपको भी आइडिया नहीं है Right. कि क्या वायरल होगा क्या नहीं चलेगा। इट्स लाइक आपका भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, लाइक मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, लाइक जब आई थिंक आपके 1000-2000 के लगभग फॉलोवर थे, ठीक है, और आई थिंक Correct. आपने लिख भी रखा है कि भाई फॉलोवर पे मत जाना कंटेंट अरे देखो। मेरे वो सेकंड लाइन ही लिखा है क्योंकि हर बंदा मेरे को पिंग करके ये बोलता है, यार ब्रो ग्रेट कंटेंट बट सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम है यार, ये क्या बात हुई, ये सबका यही इंप्रेशन है। तो मैंने बोला भाई इसको शुरू में लिख दो, तो लाइक हाँ चलो इसको पता है कि सब्सक्राइबर्स, तो मैंने बोला ये हाँ, सब्सक्राइबर्स कम है, बढ़ जाएंगे। बट वही है ऑनेस्टली, बिकॉज आपका कंटेंट सबको ही पता है कि यार कंटेंट ठीक है आपका हर उस पे लेवल पे लाइक इंक्रीज होता जाता है, लाइक काफी अभी तो बहुत ज्यादा आपका, पहले देखे तो वो न्यूज कैन यूज, उसके बाद में भी जो अभी वाले जो आने लगे वो वाले, और आई थिंक आप अभी हम्म। जो लिंक्डइन पे जो शेयर कर रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट मेथड, बिल्कुल जो आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज लिया है, जनरली लोग राइट। ट्विटर और वो लेते थे, तो वो भी बहुत अमेजिंग था और वो चल भी रहा है। आई थिंक रिसेंटली आपकी एक रिसेंटली वाली वो 10th मार्कशीट वाली पोस्ट मैंने देखी थी, वो तो आई थिंक Yeah, that went viral. तो I didn't expect it. मैं सोचा ठीक है, ऐसा ही थॉट आया डाल दिया, and yeah, it just went crazily viral. In fact, one of the best posts that I've put up. That's what people have to say. तो हाँ, LinkedIn पे again, I've been consistent for 1.5 years, and last 4 months में ही मेरा profile has just gone through the roof. It is all because of being consistent. yeah, and also honestly you are shifted your career a founder into a stand-up comedian, so what's according to you choose a right career and career advice kind of thing because I don't much use advice, but because I just say what's your experience on shifting your career like on startup founder to full time
स्टैंड अप कॉमेडियन? यार मैं तो यही बोलूंगा, इनफैक्ट लेट मी पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आप क्या करोगे? पहले पता करूंगा कि मेरा बजट कितना है और करेक्ट, बजट आपको उसमें पता चल गया, मान लो बजट बजट आपका 10 लाख है, उसके बाद आप क्या करोगे? मैं देखूंगा कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं मार्केट में और कौन कौन सी करेक्ट। अच्छी हैं जो लॉन्ग टाइम तक चल सकती हैं, जिनमें मेरी नीड्स पूरी हो रही है साथ के साथ, कि मुझे जो चाहिए, लाइक मुझे कितना, लाइक 7 सीटर चाहिए या फिर कितना चाहिए, मुझे स्वीडन चाहिए या फिर क्या चाहिए, वो सारी चीजें। प्लस ब्रांड देखूंगा कि कौन सी नई तो नहीं आ गई कोई ब्रांड जिससे पता चले कि वो सारी चीजें। तो लेट से आपके जो अभी आप क्राइटेरिया आपने बताया उसमें से 4 गाड़ी जीरो इन हो रही है, मतलब सेलेक्ट हो रही है कि चारों सेलेक्ट हो में रही है। मोस्ट ऑफ द फीचर्स है, उसके बाद आप क्या हम्म, करोगे? चार वैसे जाऊंगा, चारों का टेस्ट ड्राइव लूंगा और देखूंगा बस, कौन सी बेस्ट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप टेस्ट ड्राइव करोगे, हम्म। आप एक्सपीरियंस करोगे कि ड्राइव कैसा है, एंड ऑफ द ड्राइव डे। कैसे? हाँ भाई, फोटो में तो ठीक है, बट हाउ डज इट ड्राइव? हम्म, जब रोड पे वो टायर हिट करता है, वो फीलिंग कैसी है, राइट? कैसी जब वो है? एक्सेलरेशन की फीलिंग कैसी है, इंटीरियर्स, एम्बियंस, हाउ डज इट फील टू बी इन दिस कार, राइट? तो आप चारों गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करोगे। एग्जैक्टली। Same thing I feel should be with anyone's career. Let's say you're interested in sales, marketing, yeah, your technical job, your entrepreneurship. Try everything. Try एग्जैक्टली। करो, तभी तो पता चलेगा। अरे लोग क्या कर रहे हैं बस, ओके फ्रेंड ने बोल दिया यार सेल्स में बहुत खिचखिच है यार, उसमें बहुत एफर्ट लगता है, रिजेक्शन है, बट मे बी यू आर गुड, रियली गुड एट इट, उसको पसंद नहीं आ रहा, तुमको पसंद आ सकता है ना। तो करो, फिर इंटर्नशिप उठाओ, या तो फिर ट्राई सेल्स फॉर अ मंथ, किसी भी कंपनी को जाके बोलो, यू डोंट पे मी कमीशन पे, हम लोग लेट मी वर्क फॉर अ मंथ, एक्सपीरियंस लो, एंड देन यू कैन डिसाइड। तो अगर इफ यू आस्क मी, I started as a software engineer. I got into placement training. I've been an event manager professional. I've been into sales training. I've been into digital marketing. I have been into event management. I've had played the role of an entrepreneur 3 times. Now stand-up comedian. तो जो भी मेरे को करना था मैंने सब कुछ कर लिया है भाई, राइट? तो ये सब, एंड इट्स टेकन मी 10 years, राइट? बट जो मेरे को अभी एग्जैक्टली। क्लैरिटी है, जो मेरे को क्लैरिटी है, इट इज इमेंस। आई नो आई विल डाई विद कॉमेडी राइट नाउ, मतलब दिस इज व्हाट इट्स गोना बी, क्योंकि मैंने सब ट्राई कर लिया, राइट? एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। आई थिंक ईच वन ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली टॉट मी, राइट? ऐसा नहीं कि मैंने फिर 10 years टाइम वेस्ट किया है, नो, दे हैव ऑल टॉट मी। स्टार्टअप रिलेटेड एक्सपीरियंसेस टॉट मी कि मार्केटिंग कैसे करने हैं अपने आप को एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? इंजीनियरिंग टॉट मी कि जोक का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिक होता है। यस, इट इज एन आर्ट फॉर्म, बट एक जोक यस। का एक सीक्वेंस रहता है, there's a punchline, there's a setup, there are 3 or 4 tags, there's an act out, so it's a logical way of approaching a joke, right? तो हर चीज, आपकी जर्नी आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ सिखा रही है, but you have to go out and experience whatever you want to, you know try in life, right? ऐसा नहीं कि बस बेडरूम में सोच के, नहीं यार मेरे को यही करना है, मेरे को वो करना है, then you will start doing it and like नहीं यार वो बेटर है, बिकॉज आपने किया नहीं है ना। सब एक गेस है, इट्स अ रैंडम गेस, तो गेस मत करो, गेट इनटू इट एंड सी हाउ इट फील्स एंड यू विल गेट द आंसर। या एग्जैक्टली। और उससे लर्निंग्स भी काफी ऑनेस्टली जो मिलती है, लर्निंग्स वो कहने वाली नहीं, लाइक एक्चुअल लर्निंग होती है, लाइक यू डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स। तो ऑब्वियसली ये लर्निंग्स आपके फाइनेंस गोल्स में काफी हेल्प करती है, जस्ट लाइक यू आर इन कॉमेडी। तो ऑब्वियसली आपने राइट, डिजिटल मार्केटिंग और वो सारी चीजें सीखी हैं, तो अभी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि ठीक है, मतलब एक चीज मिल गई तो उसको मुझे कैसे मार्केट करना है। ये चीज तो करेक्ट, है राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये तो है कि जैसे हम काफी चीजें एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं, तब बहुत ज्यादा हो जाता है कि ठीक है, मतलब अभी ये कर रहा हूँ, थोड़े आधे घंटे बाद फिर कोई और रील देख ली, वो दूसरी चीज माइंड में आ गई, फिर तीसरी चीज राइट, माइंड में आ गई, और उसके चक्कर में चीजें फिर स्लिप होते होते और फाइनल
वही फिर फ्रस्ट्रेशन मिलती है कि कुछ भी नहीं हुआ एंड ऑफ द पॉइंट, ना लर्निंग्स हुई और ना फाइनली कुछ मिला हमें एग्जैक्टली। एंड आल्सो काफी लोगों का मैंने देखा कि हायरिंग इज लाइक ए बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी कंपनी, या फिर सबके लिए हायरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और सेम टाइम टैलेंट्स बहुत सारे हैं बट फिर भी हायरिंग इतनी बड़ी लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं। तो व्हाई अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू आर फाउंडर एज वेल एज वर्किंग ऑन सेल्समैन, दैट काइंड ऑफ थिंग। So you are saying, you're asking me ki how to hire, yeah, from a candidate's perspective, problem statement from the company's perspective, yeah, candidate's perspective, कंपनीज पर्सपेक्टिव कि क्यों ki लाइक how कंपनीज to को attract इतना। the right talent, हम्म। how to attract the right talent. देखो, I think how to attract the right talent is also a sales pitch, right? क्योंकि as you said, इतना talent है market में, इतने qualified लोग हैं, and there are so many offers, right? तो how do you attract that talent to work for you and not for others? राइट, क्योंकि अभी तो ये जॉब सीकर्स मार्केट बन गया है, पीपल हैव मल्टीपल जॉब ऑफर्स, दे आर डिसाइडिंग कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, राइट? तो एग्जैक्टली। व्हाट इज योर सेल्स पिच, राइट? व्हाट विल द कैंडिडेट गेट बिसाइड्स द मनी एंड व्हाटएवर, मतलब बेनिफिट्स, वो तो सारी कंपनी दे रही है आजकल. इफ यू कैन रियली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स goals and try to map those goals to your organizational goals. Like let's say if I have to pitch to a content creator and like chalo साथ में content लिखते हैं, you help me in my content. Obviously I will not be able to pay as much as big advertising companies or brand agencies यस can pay, but I एग्जैक्टली। can tell them, भाई मैं hustle कर रहा हूँ, with me right now you will learn to write from scratch till end, and I've यस myself been writing for a long time. तो जो आपको experience मिलेगा, right, you will not be given like a small thing usko karo nahi, you will have to brainstorm the whole thing and I'm there to help you, and together we create this. तो उसको भी लगेगा हाँ यार इसमें बहुत सीखने को मिलेगा, right, compared to what other companies are giving, bigger agencies are giving. And let's say if I know this person wants to probably become a stand-up comedian himself or herself, then I know, see, तुम अभी मेरे लिए लिखोगे और help me creating the content, you in a way you are trying to do it for yourself also. So I can, if I map the goals, it becomes easier for that person to actually take a decision. या एग्जैक्टली। या या एंड आल्सो ऑनेस्टली लोग इस चीज में जस्ट लाइक जो जो भी जस्ट लाइक आपने जस्ट लाइक कहा, तो बहुत सारे ना इनिशियल टाइम में लाइक ऑनेस्टली मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कॉर्पोरेट में, काफी ना कंपनीज को ये भी कि लगता है कि शायद सबसे ज्यादा लोगों को ना ऑफर्स या फिर जो वैकेशंस ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बट एंड ऑफ द टाइम वही लर्निंग्स वो वाला गेम ज्यादा आ जाता है। लाइक अगर मेरी एज में देखें तो बहुत ज्यादा ऑनेस्टली, क्योंकि जब सबसे ज्यादा तब फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, तब आपको पैसा कितना मिल रहा है, आपको वेकेशंस क्या दे रहा है, जब आप कितना लर्न कर रहे हो, पता चला एक साल कंपनी में हो गया और आपने बहुत ज्यादा लर्न नहीं किया, तब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। Right. रदर देन अगर आप ठीक है आपको वेकेशंस नहीं मिले हैं, इतना पेड ऑफ नहीं मिला है, इतना वो नहीं मिल रहा है, इट्स ओके ठीक है, बट एंड ऑफ द टाइम अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो गई है तो वो सारा मेजर्स हो जाता है, आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इट्स ओके, लाइक मुझे जो मैन चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, ठीक है, उसको मैं Right. और दूसरी जगह शायद अप्लाई करके एज ए साइड हसल्स या कुछ भी करके मैं मनी तो एंड ऑफ द टाइम में अर्न कर ही लूंगा, अगर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग्स मिल गई है तो। And also Sure. yeah, also other thing about you, you are changing many things like on career wise, on content creation things. What's your major learnings on all things, like on startups, like on career, on content creation? यार मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, choose one thing in life and be the best at it, right? Find out what is it that you really want to do and you've got to be the best at it, क्योंकि इतना competition है, for you to really make a mark you have to be the best, right? तो एक obsession होना चाहिए, but if you're chasing multiple things,
फिर वो फोकस लाना बहुत डिफिकल्ट है, right? So my last company sales 5x was doing very well, but I've drastically reduced, my sales training assignments. I tell a no to a lot of clients, though those are really good projects, because अभी मैं कॉमेडी में पूरा घुस गया हूं, तो I won't do justice if I take up both. कॉमेडी को भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, ट्रेनिंग को भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा. So choose one thing and just be, the best at it. There's no other way. Yeah, exactly. And one of the last questions of mine, according to you, what content creator do mistake in their life कि जिसकी वजह से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक है तो नहीं चल पाते हैं, इनिशियल टाइम में उनका जोश बिल्कुल हाई रहता है इतना, एंड देन फिर बिल्कुल धीरे 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 एंड हो जाते हैं. 3 things. One is consistency. बनाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वीक नहीं बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे. तो कंसिस्टेंसी इज वन बिग इशू. सेकंड इज पेशेंस. रिजल्ट्स अभी चाहिए, अभी मेरे को फॉलोअरशिप चाहिए. दैट्स अनदर मिस्टेक. यू गॉट बी पेशेंट. थर्ड, दे डोंट नो व्हाट दे स्टैंड फॉर. मतलब हर चीज का कंटेंट बना रहे हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट हु आर यू, मतलब व्हाट इज इट दैट यू स्टैंड फॉर. तो वो भी मिसिंग है. वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कि even I have struggled with it. Even now I have an idea of what I stand for, but I don't know if that's what eventually it will be. But at least I have some answer right now. So you need to know कि आपका why are you doing what you're doing and what is the reason behind it. तो जब तक वो clarity नहीं आएगा, it's very difficult to continuously create content. Yeah, exactly. Or anything you want to be share on like epically. I think we've spoken about most of the things. I would probably last में यही बोलना चाहूंगा, enjoy the journey, right? So have fun, and yeah, that's the good state to be in. Yeah, exactly. So thank you so much, Anmol, for joining with me and accepting my invitation. Honestly, giving your time, and because it is so important. Thank you so much, Giriraj. I hope, I wish you all the very best, and yeah, keep rocking and keep the series going. Yeah, yeah. And also, guys, if you are not following Anmol on social media, go check out and follow on all social media, consume their content, because it create content every social media on different consume content. Sorry, if you अगर अनमोल को आप लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो वहाँ कंटेंट फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा. तो वहाँ मतलब वो एक अलग ही लेवल का कंटेंट होता है. सेम इंस्टाग्राम पे आओगे तो वहाँ एक अलग ही कंटेंट होता है रील्स का. सेम यूट्यूब, वहाँ पे एक अलग ही कंटेंट होता है. तो आई थिंक ऑल जो आपका सारा है कि प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग भी कंटेंट क्रिएट करना, कि वो वाला बहुत स्पेशल है. तो also I put out all your links on bio, तो you check out. अगर आपने नहीं किया हो अभी तक तो जाओ, चेकआउट करो, फॉलो करो, कंटेंट देखो. देखने के बाद आप खुद ही फॉलो कर दोगे. Thank you so much, buddy.